Hi friends, welcome to the official YouTube channel of Arihant Academy. I am Mihir Patel, the Maths faculty at Arihant Academy. For more videos like this, please like, share and subscribe. Don't forget to hit bell icon to get updates. So in this video, we are going to learn the proofs from the chapter called Properties of Triangle. Okay, so there are two major rules in that particular chapter, and that is cosine rule and sine rule. So let's prove those results. We start with sine rule. Now here they say in triangle ABC we need to prove a upon sine A is equal to b upon sine B is equal to c upon sine C is equal to 2r, where r is circumradius of triangle ABC. Okay, now to remember this proof easily, let us list out few hints, okay, by which we can remember this proof very easily. So my hint number one will be, okay, drop perpendicular from A. Now actually you can drop it from any point, but let us fix up A, okay, and find area using angle B and angle C. Okay. Now what I mean by this, I'll be explaining in the proof, but just first remember the hint number one is to draw perpendicular from A and find area using angle B and angle C. Okay. Sure. Number two is we should take a point P, take a point P on circumference of circle, okay, take a point P on the circumference of the circle such that AP is diameter, okay. And finally number three, the final hint by which we are going to conclude this proof, and that is if we done this in 10th standard circle chapter, there was one property which says angle subtended by the same arc on the circumference of the circle are same. Okay, so angles by the same arc subtended on circumference are equal. Okay, so just keep these three hints in your mind. You'll be able to write this proof very easily. Okay, so let's begin this proof. To start, we consider a triangle. Let us take a triangle ABC here. Okay, ABC. Now what did I say in the first hint? That I am supposed to drop a perpendicular on to side BC from A. Now we know the usual notation. What we follow in properties of triangle is the side opposite to A is small a, side opposite to B is small b, and side opposite to C is small c. चलो ठीक है, ABC हमने ले लिया. अब hint number one ने ये भी बोला that you should find area using angle B and angle C. Now what area का formula we know? We know that the basic formula to find area is what? Half base into height. In the diagram, it is clearly visible that we have got the base of the triangle ready, that is BC. Okay, but we need height. And to find that height AM, we can use trigonometry, where I can use either angle B or I can use angle C. Okay, so just see, इनको नहीं समझा. What I am saying is, we consider triangle ABM. Just look at triangle ABM. Do you see that? In that, can you help me with sine B? What is sine ka definition? It is opposite upon hypotenuse. So sine B is opposite upon hypotenuse. So with that, opposite side is what? AM upon adjacent side is C. So with this, is it not I got AM as C sine B. Done. So I got the height of the triangle, and from there on, can I say area of triangle ABC? See, please understand, ABM near total area is half base into height. So what's the base here? We have got A. Height here we got C sine B.
So with that we got the result half AC sine B. That is your result number 1. Now let us take the other side of the triangle, that is ACM, because I say I need area using angle C also. So from there, can you find sine C? Again, opposite upon hypotenuse. So which is the opposite side there? It is AM upon hypotenuse is AC. So this time we got AC, and that AC ka value is B. We can write directly B there. Okay, so let us write B here. So it's not AM will be what? It is B sine C. So we got height again. Base तो already तैयार था हमारे पास, ठीक है. So again area of same triangle ABC can be written as half base into height, where base length is A and the height is B sine C. So with that we got half AB sine C, and this becomes result number 2. Fine. Now what we do here is, can we equate 1 and 2 because both represent the same triangle? So from 1 and 2, can we say that it was half AC sine B, half AC sine B is equal to half, we have AB sine C, AB sine C. So here half get cancelled, AA get cancelled, we got C sine B is equal to B sine C, and if I arrange it, am I not going to get C sine C upon B sine B? Okay. Similarly, can we also prove, okay, we can prove that B upon sine C is equal to A upon sine A. क्या फर्क पड़ता है, और कोई पॉइंट से पॉपुलर ड्रॉप कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही रहेगा. So from above to result, there is no need to prove it again. ठीक है, you can directly write similarly this to result. So from above, can we say we got A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C, and your first part is done. Sine rule is true. ठीक है ना, because B upon sine, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, I'm sorry, here I should write sine B, isn't it? So this part is same in both the results, so we can write all three are equal. Done. So sine rule खत्म हो गया. अब अपने को prove क्या करना है? If you see this part, the real interesting part of the proof is to prove that is equal to 2r. ठीक है, अब वो equal to 2r कैसे prove करना है? So for that I given you hint number 2 and 3. Can you read hint number 2? Hint number 2 क्या बोल रहा है? Take a point P on the circumference of a circle such that AP is diameter. ठीक है? So for 2r. Okay, let us draw a diagram here. Isn't it? We are talking of a triangle and a circumcircle. Okay, चलो अब हम लोग circumcircle का बात कर रहे हैं. Just a sec. Yes, we are talking of a circumcircle here. Now what we do it is we take a point A here, okay, B and C here, fine, and let us join them. Sorry, so I got A, B and C. Sure, done. As a triangle. Now what did I say? I should take AP, point P anywhere on the circle such that AP becomes diameter. ठीक है, so I will be taking AP as diameter. Done. तो यहाँ पे मैंने AP को diameter ले लिया. Okay, AP as diameter. Fine. And let us join this with C. यहाँ पे मैंने इसको join कर दिया. ठीक है, so this diagram you need to follow. With this, tell me, is it not length AP is actually 2r? Radius का double हो जाएगा because it's a diameter. ठीक है, यहाँ तक हो गया. This diagram you need to remember. I repeat, I took AP as diameter and the circumcircle. Fine. चलो, अब यहाँ पे third hint क्या बोल रहा है? That the angles by the same arc subtended on a semicircle are equal. तो अगर आप इसको ध्यान से नोट करो in this, isn't it this angle and this angle? Okay, fine. These two angles are the angle subtended by the arc AC. Do you see that? तुम्हारा arc AC ने वो angle subtend किया at point B as well as point C. So here we say that angle, yes, sorry,
So here we write angle ABC is equal to angle APC. The reason is angles subtended by arc AC. ठीक है ना, सेम सर्कल पे ड्रॉ किया तो बोथ एंगल्स आर इक्वल. नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड हियर, कैन यू टेल मी एंगल ACP का वैल्यू. कम ऑन, एंगल ACP. सो अगर आपका सर्कल स्ट्रॉन्ग है तो कैन आई से इट्स अ 90 डिग्री. द रीजन इज एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड by diameter, isn't it? Whenever a diameter subtends an angle on the circumference of the circle is 90 degree. तो ये हमारे पास 90 डिग्री है. So if you focus on triangle APC, so let me draw it here separately so that you understand. APC is not the value of AC is B as we say the standard notation. Here it is C and here it is A. बराबर ना, तो ये B हो गया बराबर. This is the angle we are talking and this is 2R, isn't it? So with that, tell me, can I say sine of angle ABC or I just say angle B चलेगा? Sine of B is equals to, can I say sine of P? और डायग्राम अगर आप रिफर करोगे तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अपोजिट अपॉन hypotenuse, so can we write B upon 2R and that's it. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो can we say B upon sin B is equal to 2R, isn't it? तो हमने ये B upon sin B equal to 2R प्रूव कर दिया. So can we similarly prove that A upon sin A as well as C upon sin C both is equal to 2R. Okay, so from above we get the final result, that is therefore A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. ठीक है ना, is equal to 2R, sorry, where R stands for what? Radius of the circumcircle. Fine. So with this we are done with the sine rule, where I repeat one more time, the most important hint point was what? To drop a perpendicular and find area using angle B and angle C. Keep that in mind. Your first result would be ready. We'll just equate the area. To get the second result, that is 2R wala result, what we do it is from any point A, we draw a line, or I better say diameter, okay, AP, and when I say diameter it passes through center, and to remember there is P को हमको किससे ज्वाइन करना है in this diagram? C के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है? And we are going to talk about angle subtended by arc AC. So we can see two angles are subtended by arc AC, that is angle B and angle P, and both angles are going to be same using the property of a circle. And with this we get 2R वाला result also and we get the final answer. ठीक है? So hint अगर याद होगा तो ये proof बहुत easily याद रह जाएगा. ठीक है? Now let's move to the second property of properties of triangle वाले part में, that is cosine rule. Okay, this is cosine rule of triangle ABC. Now to remember this rule, hint. Again, I give you simple way to remember this proof rather than by hiding all the things. Hint number 1 says we use distance formula. Okay, so to prove this, we are going to use what? Distance formula. Sine rule के लिए क्या यूज किया था? Area of triangle. ठीक है, just remember area of triangle. Your full proof. हाँ, अगर 2-3 बार properly लिखा होगा तो याद आ जाएगा. Likewise here, just keep in mind that we are going to use distance formula. Now you must be knowing the distance formula is what? Under root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. So obviously then you need what? You need coordinates. अगर मुझे distance का बात करना है तो coordinate का बात करना पड़ेगा. ठीक है? So I need coordinates. अब next doubt किसके? तो obviously the vertices of triangle. हम लोग triangle का बात कर रहे हैं. ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? Hint number 2, get coordinates of vertices of triangle ABC. ठीक है ना?
अब वर्टेक्स का जब भी बात होता है, इज इट नॉट कोई भी पॉइंट का वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट से डिफाइन होता है? ओरिजिन। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, स्मार्टली हम जो एंगल का बात कर रहे हैं वो एंगल वाला जो पॉइंट है ना, वी आर गोइंग टू कीप इट एट ओरिजिन, उसको ओरिजिन पे रख देंगे। Okay, and one more point on the coordinate axis, because see you take triangle anywhere on a graph paper, okay, आपका property तो वही रहने वाला है। So to have a simplified calculation, let us keep one of the point as a point at origin and one more point of the triangle on the axis, ठीक है, और वो भी x axis fix कर लेते हैं। So the third hint is keep one point at origin, one more on positive x-axis. Let us keep that also fixed. हम लोग positive x पे लेंगे, ठीक है। Now the last hint which is most important, जो हमने सीखा रहेगा polar form करके, if you recall, of writing coordinates of the point. If not, then simply by heart that when you have a distance of a point, let's say this is point P, okay, and the distance is r from origin, and angle what it makes with x-axis is theta. In that case, we can write the coordinate of P as r cos theta, comma r sin theta. Just keep this in your mind, and with these 4 small hints, you'll be able to prove this theorem very easily. Okay? Fine. So let me show you how these hints are going to help me to prove this result. So what we do first is consider triangle ABC. Consider triangle ABC. As my hint number 3 says that I need to keep one of the vertex or one of the point at origin and the other on positive x-axis. अब वो किस पे डिपेंड करेगा पता है? See here you are proving it for A. Okay, तो A I better say ये A नहीं लेते, एंगल A लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A के लिए आप प्रूव कर रहे हो ना, तो कीप एंगल A at origin, ठीक है। So consider triangle ABC. And here I'll draw a diagram with xy axis. चलो ड्रॉ कर दिया। कौन से पॉइंट को ओरिजिन पे रखना है? ए को ओरिजिन पे रखना है। ओके, द रीजन इज सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस ए, ये आपके दिमाग में रखना। फाइन, चलो अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट और बचे, बी एंड सी। नाउ द चॉइस इज योर्स, एनी पॉइंट कैन बी केप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो लेट अस से मैंने यहाँ पे बी को रख दिया और सी को आई कैन कीप इट एनीवेयर हियर टू गेट ट्राइंगल एबीसी। चलो ट्राइंगल एबीसी आ गया। एंड नाउ द थिंग्स इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखना, ये एंगल ए है, मानते हो? यूजुअल नोटेशन अगर फॉलो करें तो व्हाट इज एंगल बी, सॉरी लेंथ बी, ए बी का वैल्यू इट इज सी, लेंथ बी सी का वैल्यू इट इज ए, एंड लेंथ ए सी का वैल्यू इट इज बी। ये आपका यूजुअल नोटेशन हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट्स। तो ए का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा बिकॉज इट इज ओरिजिन। बी इट इज बीइंग ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इज नॉट उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो तो व्हाट वुड बी इट्स x कोऑर्डिनेट? द आंसर विल बी c, बिकॉज उसका ओरिजिन से लेके जो लेंथ है वो c है। एम आई क्लियर? तो अपना देखो, a का कोऑर्डिनेट तैयार हो गया, b का कोऑर्डिनेट तैयार हो गया, नाउ आई वांट कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो कैन आई से द डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम a which is origin is b, and if you see angle CAB is equal to A। तो अगर आप ये हिंट नंबर 4 ध्यान से देखो तो इज इट नॉट आई गॉट एंगल मेड बाय CA विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहां पे जो थीटा है वो यहाँ पे A है, एंड वहां पे जो R है हिंट में वो यहाँ पे B है। तो कैन आई से देयरफॉर R इज इक्वल टू B and theta is equal to A, so therefore coordinate of C will be what? It is r cos theta comma r sin theta. With that, can we write it as r के जगह पे b cos a comma b sin a, and you got coordinate of c also। मतलब देखो अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गया, and this is where अपना मेन पार्ट ऑफ प्रूफ इज ओवर। अब आपको खाली डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। So now tell me which length you want to talk? You want to talk A? Required देखो, आप A की बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो A कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो BC रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम A इज इक्वल टू लेंथ BC, ठीक है।
जहां पे हमारा b और c का कोऑर्डिनेट रेडी है। सो व्हाट वाज b का कोऑर्डिनेट? अगर आप ध्यान से देखो तो b का कोऑर्डिनेट इज c, 0 और c का कोऑर्डिनेट b cos a, b sin a। तो दिस इज c, 0 and this is b cos a, b sin a। डन हो गया। तो नाउ लेट अस गो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, tell me what you can write. Can we write a is equal to bc के लिए under root of, let us start with difference of x का square. So can we write b cos a minus c का square plus b sin a minus 0 का square. So I have applied distance formula. अब तो खाली simplify करना है, तो can we do squaring both the side? a square आ गया। On the right hand side we get b cos a minus c का square plus b square sin square a, because वहां तो 0 ही है। Now here in this can we go for a minus b the whole square formula? चलो expand करते हैं। What we get here? So therefore a square is equal to b square cos square a minus 2bc cos a plus c square plus b square sin square a. And if you are smart, tell me one thing, it's not this term and this term I can club. ये दोनों को club कर लेते हैं। So what you can take common from there? Can we take b square common? तो अंदर क्या बचेगा? Cos square a प्लस साइन स्क्वायर ए, सरप्राइज, एंड प्लस सी स्क्वायर साइड में प्लस 2bc cos a अलग। Now what is cos square plus sin square? It is 1. So what we get is a square is equal to b square into 1 plus c square minus 2bc cos a, and therefore we get the final result as b square plus c square minus 2bc cos a, and your proof is over. This is what we want in the final answer. ठीक है ना? So it's a very simple proof. Again, if you know how to prove it, मतलब what are the key steps in this? I better say hint. So what is the first thing to remember cosine rule? Distance formula. Number 2 is what? Get the coordinates of the point, and to get the coordinates, what I need to place any one of the point as on the origin, the other one on positive x-axis, and the last one you can put it in any of the quadrant. ओके और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, विच इज r cos थीटा, r sin थीटा। अगर ये 4 हिंट्स को आप रिपीट करते हो, यू नो व्हेन टू यूज इट, आई थिंक द थ्योरम वुड बी वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, फाइन। वन लास्ट थिंग, दे माइट आस्क यू आल्सो फॉर b square is equal to, because there are 3 different forms in cosine rule, if you recall, cos a, cos b, cos c। तो डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा प्रूव करना है, कोई भी एक ही पूछेगी। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी पूछा है, ठीक है, तो आपको खाली क्या ध्यान रखना है पता है? डायग्राम में थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम। आप वो प्रूफ पूरा खुद से लिखने को ट्राई कर सकते हैं, तो इट वुड बी नाइस प्रैक्टिस फॉर यू। चलो, सबसे पहले मैं वर्टेक्स, कौन से वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखेगा? तो एज आई सेड आई एम टॉकिंग ऑफ कॉस बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपका चॉइस है, एक्स एक्सिस पे जो चाहिए आप पॉइंट को रख सकते हैं, मतलब ए या सी में से कोई भी एक को। तो लेट अस से मैंने इसको ए को रख दिया, तो सी कहाँ पे रहेगा? इट वुड बी हियर, एंड आपका ट्रायंगल तैयार। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। पहले यूजुअल नोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सी के अपोजिट सी, बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए, और ये एंगल बी है। चलो, विद दिस टेल मी बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? c,0 बराबर, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर आप देख रहे हैं तो इज नॉट, इट इज r which is a in the diagram, cos theta which is b into a sin b। बस ये डायग्राम का यूज करो, एंड नाउ गो फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ऑल्सो चलो एक तीसरा रिजल्ट का भी डायग्राम बना लेते हैं। फॉर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। चलो, नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस ऑल्सो। टेल मी विच पॉइंट विल बी एट ओरिजिन? यस, यू आर राइट, C will be at origin. Why? Because we are proving for cos C. ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट 0,0। Which point you will take on x-axis? You have a choice. You can put A, B. I will put A here. ठीक है, and B कहाँ पे आएगा? Anywhere in the quadrant. तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। Now help me with the usual notation. Side opposite to B क्या होगा? B. Side opposite to C, C. Side opposite to A, A. ठीक है, और ये एंगल C हो गया। Now can you help me with the coordinates? टेल मी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? b, 0। वंडरफुल, बिकॉज इट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड उसका लेंथ ओरिजिन से b है।
And finally, what is beta coordinate? It is a cos c comma c, sorry, a sin c, and then go for the distance formula to get the answer. So depending on which result they want in proof, you will change your diagram, but otherwise the writing style remains same. Okay, so with this we are done with the two important theorem of trigo equation chapter. Fine. I hope you have enjoyed the video. Thank you so much.